Good morning, friends. This is Kiran Sir's voice. Welcome to online classes. We are continuing the lesson number 4, becoming great. And actually, in this lesson, we discuss about the Mary Kom. And last period, this paragraph we deal with you and regarding the Mary Kom. And actually, in this paragraph, the first time in Olympic Games, they gave the entry of the boxing and in the 2014 in Asian Games Mary Kom won the gold medal in South Korea. Okay, uh, till here we discusses in a last period. Now see next paragraph. In recognition of her achievements in 2013, Mary was awarded the Padma Bhushan, the third highest civilian honor in India. She was previously awarded the Padma Shri 2010 and the Rajiv Gandhi Khel Ratna, India's most prestigious sports award. So, in this paragraph, having the medal of the Mary Kom, and actually students underline 2013 Mary was awarded Padma Bhushan. This is the Padma Bhushan received by the government's Mary Kom in 2013, and in 2010 he received the award Padma Shri and Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan. These are the three awarded, and remaining that two awarded Padma Bhushan and Padma Shri awarded by Indian government to the Mary Kom. And see against Rajiv Gandhi Khel Ratna award. This is the very great and big award in the sports areas. दिस इज द प्रेस्टिजियस एक प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मेरी कॉम ने रिसीव किया था. सो स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ these are the awards mentioned here, underlined in your textbook. Okay, Mary got married in 2005 and she and her husband have 3 sons. Actually after that 2005 में उन्होंने शादी की एंड उनको 3 लड़के हैं. दे लिव इन इम्फाल. दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ द मणिपुर, एज वेल एज ट्रेनिंग ऑडियसली. ऑडियसली मीन्स विद ग्रेट एफर्ट्स. ट्रेनिंग ऑडियसली मेरी campaigns for various causes. Campaign race between the candidates for effective office. This is called a campaign. So after that in 2005 she got married and she have 3 sons, and after that after marriage he giving the training to the others. She promotes animal rights. You have idea about the animal rights? एनिमल के जो अधिकार होते हैं उनके लिए भी वो वर्क करती है. शी promotes animal rights. She encourages people to volunteer and work to improve their communities. खुद से लोगों को वो आह्वान करती है, इनकरेज करती है को लोगों तुम खुद एनिमल्स की जो कम्युनिटी है उनको इम्प्रूव करने में मेरे साथ हेल्प करो. एंड दिस आर द सोशल वर्क डूइंग द मैरी कॉम. ओके, सी द फोटोग्राफी ऑफ मैरी कॉम. दिस मैरी कॉम from Imphal, means Manipur states, and this is the Kangethi village, and this is the first boxer in our India, from our India, and she won the varieties of medal in Olympic Games, Asian Games, and South Korea also. And after that when we got married, after that she promotes the animal rights and she encourages the people कम वॉलंटियर, आप खुद से आओ एंड एनिमल्स की कम्युनिटी को इम्प्रूव करो, ऐसा आह्वान वो लोगों को भी करती थी. मेरी इज़ पैशनेट अबाउट प्रमोटिंग हेल्थ एंड फिटनेस. हेल्थ और फिटनेस के बारे में भी वो लोगों को जानकारी देती थी. ये उसका एक पैशनेट था, पैशन था. शी टीच डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रेन हाउ टू बॉक्स and thereby passing on the skill of determination, speed, agility, power,
endurance and mental toughness. So the Mary Kom giving the training to the childrens and disadvantage, he talking about the disadvantage about how to box and thereby passing on the skills of determination. सब बच्चों को जो बच्चों को वो पढ़ाती थी उनको डिटर्मिनेशन, स्पीड, एगिलिटी मीन्स मूविंग विथ स्पीड एंड ग्रेस, कितने जल्दी तेज गति से आप मूव कर सको, इस तरह की एबिलिटी ही गिव द चाइल्ड्स. पावर, इंड्योरेंस यानी सहनशीलता. दिस इज द एबिलिटी टू कीप गोइंग अंडर डिफिकल्ट कंडीशन में भी कैसे बियर करना. दिस आर द थिंग्स ही गिविंग टू द अदर्स. एंड मेंटल टफनेस, जब आप स्पोर्ट्स करते हो तो अपोजिशन पार्टीज गिविंग द सो मेनी वर्ड्स ऑन यू, so that's why for your discouraging. So that's why the Mary Kom discuss about the mental toughness, agility, speed, determination, endurance and power. These are the whole things give to the childs, those who are coming for the training for her. You can learn more by watching the film about her life of reading her autobiography Unbreakable. So Unbreakable, this is the autobiography of the Mary Kom, and after that मेरी कॉम के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसे मेरी कॉम बनी थी प्रियंका चोपड़ा. दैट्स वाई दिस इज द इन दैट मूवी शोइंग द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मेरी कॉम. And this is the autobiography. If you want to read the Unbreakable. This is the autobiography of Mary Kom. You understand the all aspect of the Mary Kom. Okay. Today Mary is a hero of many schools. Childrens like you. तुम्हारे जैसे बच्चे अभी भी मेरी कॉम के फैन हैं आज भी. But you must never forget that you too can become great one day. Great one day if you do everything to the best of your ability and take the chances that are offered to you in life. एक दिन मेरी कॉम जैसे आप भी बन सकते हो. You have to do the hard work. Those who are having a greatness, जिनको ग्रेटनेस चाहिए है उनको हार्ड वर्क करना तो जरूरी है. दिस इज द कंपल्सरी. सो दैट्स वाई इफ यू वांट टू लाइक अ मेरी कॉम यू हैव टू डू द हार्ड वर्क आल्सो. And after that you have to become a great personality in our India. So that's why the Mary Kom giving the so many instruction for those who are becoming great, those who are becoming hero to the others. That person have to do the hard work. So see again, today Mary is a hero to many school children like you. तुम्हारे जैसे बच्चों के अभी भी वो मेरी कॉम हीरो है. बट यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट यू टू कैन बिकम ग्रेट वन डे. आप भी एक दिन ग्रेट बन सकते हो इफ़ यू डू एवरीथिंग टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. तुम्हारी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता तुम उस काम में डाल दो तो. एंड टेक द चांसेस दैट आर ऑफर्ड टू यू इन लाइफ. और ये चांस हो सकता है कि अपने लाइफ में आप एक ग्रेट पर्सनैलिटी वाले इंसान बन सकते हो. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी गुड लेसन एंड इन दिस होल लेसन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेरी कॉम एंड दिस इज द ग्रेट पर्सनैलिटी. ही हैविंग द प्रॉब्लम मेकिंग द great personality, and like that you have also faced the many problems to becoming great. Okay students, I hope that you understand the whole lesson. So students, today we stop here. We will continue the comprehension in next period. Thank you. Have a nice day.